Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to another edition of the Warriors channel's continuing coverage of the Cricket World Cup 2023. और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आतिर and we will break down the hyped up game Pakistan versus Afghanistan at Chennai that was played. It was the fifth game for both teams. थोड़ा सा आपको बताते चलें कि Pakistan coming into this match had won two, lost two. Afghanistan won one, lost three. So, and of course, the rivalry amongst themselves led up to the hype as well. So, एक तरह से must win था दोनों के लिए. So, welcome Aatir. Thank you, Adil bhai. Thank you for having me again. Okay. तो कैसा लगा आपको कल आपने मैच देखा फिर? मैच देखा भी और बस देख ही लिया और काफी डिप्रेशन हुई थी उसके बाद तो एंड ऑनेस्टली आई चेक्ड आउट अर्ली एंड बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा था किसी से बात करने को कल की परफॉर्मेंस देख के सो इट वाज चलें. हॉट. Okay. So let's break it down in sequence. First of all, Pakistan won the toss or decided to bat, which was looking like uh, based on historical situations, scoreboard pressure, putting a good score in. कैसा लगा आपको ये डिसीजन? आई थिंक डिसीजन तो इतना मुझे कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा. हालांकि देयर हैव बीन वॉइसेस कि नहीं जी हमें बैटिंग सेकंड करनी चाहिए थी. फिलहाल तो वर्ल्ड कप ऐसा जा रहा है कि डजंट मैटर हम क्या कर रहे हैं, इट्स जस्ट गोइंग ऑल रॉन्ग फॉर अस. एंड इवेंचुअली व्हाट द स्कोर दैट वी एंडेड अप ऑन, मतलब वो इतना बुरा नहीं था जितना वी वर मेकिंग इट आउट टू बी. सो आई एम अ बिट इनडिफरेंट ऑन कि हमने पहले बैटिंग की या बाद में बैटिंग की. आई थिंक वो सेकंड बैटिंग के अपने एडवांटेजेस थे. बट वही बात है कि पिछले मैच में भी, इंडिया वाले मैच में भी हमने यही सोचा था कि अगर हम स्कोर अच्छा कर देते और स्कोर बोर्ड प्रेशर पे लेके आए तो theoretically we have the bowling to defend it. लेकिन उसके लिए we had to chart out a very big total, which I think we probably didn't get to the total that we wanted. लेकिन it was still defendable. Unfortunately, I think our bowling let us down. So Okay. I think decision is okay. It's not Yeah. bad. Okay, so Pakistan then tried to work up on a score. Uh, the key elements were Babar Azam's innings that he developed. Kafi criticisms are Rizwan got out early. Abdullah Shafiq managed to also pull up a good score. So, मतलब एक पॉइंट पर लग रहा था कि there was a bit of a stutter when एक बेंच का प्लेयर अफगानिस्तान ने यूज किया, नूर अहमद, who was हमने प्रीव्यू में बात की थी, they would likely use an extra third specialist spinner and they did. So Mujib, Rashid and Noor attacking, and Noor ने काफी पाकिस्तान को तंग किया. So Pakistan's batting did struggle, or they did put up a score in the end thanks to Shadab and Iftikhar's big Yeah. stand at the end. Yeah. How did you see this? सो आई थिंक देखें, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग्स एक तरह से आप कह सकते हैं. बाबर के लिए मैं आई एम जस्ट इवन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मैच, मैंने मेरे ख्याल से बाबर के लिए इंपॉर्टेंट था उसको रन्स मिले एंड ही हैड टू स्टे ऑन द पिच. तो आई एम नॉट टू अपोज्ड कि उसने जरा अपने आप को टाइम दिया और उसने दोनों, नबी को भी अच्छा खेला एंड राशिद को भी अच्छा खेला. जब भी वो शॉट कराते थे उनको पुल करके उसने चौका भी मारा. बट आई फील के द कंसिस्टेंट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान इज हैविंग इज कि बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हैं. 150 प्लस डॉट बॉल्स अगर आप खेल रहे हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, विच इज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस T20 स्पेक्टिकल, दैट्स जस्ट टू मच दैट यू लॉस्ट. ठीक है, शादाब और इफ्तिखार ने एंड में आपको फायर पावर दिया, लेकिन मिडिल ओवर्स में हम बहुत ज्यादा लॉकडाउन हो गए थे. आई फील के बाबर की चले ठीक है वो इनिंग्स है, लेकिन इवन सऊद शकील प्लेड बहुत स्लोली. उसकी अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 70 ऑड था. रिजवान जल्दी आउट हो गया. इमाम उल हक भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके अंदर भी कोई फ्लेयर नहीं नजर आ रही फॉर सम रीजन. वो बार बार वही शॉट खेलना चाहता है वो अपनी पुल की, और उसी पे आउट होता है. आई डोंट नो कि उसको क्या चाह रहा है. ही डज ही वांट टू ब्रेक अ पॉइंट, बट आई थिंक इफ यू आर स्ट्रगलिंग ऑन अ शॉट तो यू नीड टू कम अप विद एन ऑल्टरनेटिव टू दैट. लेकिन वही वाली बात है, मिडिल ओवर्स में हम बिल्कुल बॉक डाउन हो जाते हैं. बाकी टीमें क्या कर रही हैं कि दे मेंटेन दैट 5 to 6 रन इन ओवर वाला एवरेज, एंड हम थोड़ा सा ज्यादा हवा बना देते हैं पिच का कि जी पिच बहुत ज्यादा एक्ट कर रही है. आफ्टर द मतलब कि जो मिड मैच पे पहुंचे थे हम, तो कमेंटेटर्स और एनालिस्ट भी ये कह रहे थे कि हाँ वो पिच थोड़ी स्लो थी तो बड़ा अच्छा टोटल था एक्सेट्रा.
अफगानिस्तान आया है और वो तो लग रहा था पता नहीं कौन से पिच पे खेल रहे हैं, उन्होंने तो 6 एंड ओवर से स्टार्ट किया, गुरबाज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इधर वी बोल्ड मतलब कि हॉरिबली रॉन्ग व्हिच वी डिड, बट आई डोंट थिंक कि वो पिच के अंदर ऐसा था कि इट वारंटेड कि हम बहुत ही ज्यादा अपने आप को बॉटल कर दें। हैविंग सेड दैट, ऑल क्रेडिट टू अफगानी बॉलर्स, उन्होंने काफी टाइट बॉलिंग कराई, एंड दे ट्राई टू कीप अस एट बे। आपने नबी को भी देखा, एंड देन जो उनका दूसरा बॉलर था नूर अहमद, उसने भी अच्छी बॉलिंग कराई। सो आई थिंक मैं देखे क्रेडिट वेयर इज And क्रेडिट। as soon as the pace came, then the runs started to flow again through Pakistani bats, and हाँ एग्जैक्टली। they got the total at the halftime point, like you said. Pakistan और probably सारे ज्यादातर जितने भी शायकीन थे काफी मतलब रिलैक्स्ड और रिलीफ फील कर रहे थे 280 प्लस का टारगेट, बट एज यू सेड पाकिस्तान की बॉलिंग वाज द वन दैट डिसअपॉइंटेड द मोस्ट, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू ओवर्स इट नेवर लेट ऑफ। और अफगानिस्तान जिस तरह आप कह रहे हैं, गुरबाज और इब्राहिम जदरान जस्ट पुट अप अ ह्यूज स्टैंड ऑफ 130 रन्स। Yeah, I think you need to look at the mindset. They carry the momentum जो इंग्लिश वाले मैच में वो जीते हैं। गुरबाज ने बिल्कुल मतलब कि फेयरलेस क्रिकेट खेली है, आते ही उसने कहा कि मैंने तो नहीं छोड़ना। डजेंट मैटर कि समवनस बॉलिंग यू एट 150 केस, वो अगर हारिस रऊफ आ रहा है तो आ रहा है, तो उसने फिर भी 17 रन उसको मारे हैं, एंड मतलब कि इट वाज हिज फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर, डजेंट मैटर। आई थिंक ये भी एक इशू है कि हारिस रऊफ स्पेशली पावर प्ले के अंदर फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। उसके पास फील्डिंग प्रोटेक्शन नहीं होती तो उसको बहुत ज्यादा रन पड़ रहे, बट जस्ट जनरली द प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग इज कंसिस्टेंसी ऑफ लाइन एंड लेंथ। वो बार बार आप अगर बाहर आउटसाइड ऑफ स्टंप कराते रहोगे, लोग आपको कट करेंगे, बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे। आपको बहुत कंसिस्टेंट लेंथ पे रखनी पड़ेगी। यू नीड टू क्रैम्प पीपल फॉर द रूम। बुमराह को देखें, वो एंगल करके अंदर लेके आता है। हारिस रोफ जो है बस वो कह रहा है कि मैं तो बस अब पता नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है स्पीड का, वो मारी जा रहा है, लोग उसको निकाल रहे हैं तो रन उस पे। ठीक, तो तो स्पिनर्स जिस पर इतना ज्यादा मतलब फोकस था, if the Chennai wicket it will spin, या it will spin. Afghanistan got purchase, Noor Ahmed got 3 wickets. या Pakistani spinners came, and I believe they took no wickets यार last. एग्जैक्टली अच्छा देखें, मैं इसमें भी अगर देखूं तो आई थिंक दिस वाज अ रिलेटिवली स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस बाय शादाब खान एंड उसामा मीर। ठीक है, उनको विकेट्स वगैरह नहीं मिले, लेकिन मुझे तो बॉलिंग ऑप्शंस की समझ नहीं आ रही। आपका मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इफ्तिखार अहमद है, वो 5 ओवर क्यों करा रहा है? मतलब कि आप 5 ओवर 27 रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली ही इज क्रिएटिंग प्रेशर, तो आप उसको लगाओगे। आप उसामा को फिर से 46 ओवर उसामा को देना जहां 11 रन पड़े थे, वो तो मुझे उसकी समझ ही नहीं आई कि वो क्यों कर रहे हैं। आपका अगर और ऑफ स्पेशली स्पिनर जब बॉल शायद रिवर्स भी कर रही थी ऑन हाँ टू ओकेजन्स। एग्जैक्टली तो एंड उसामा इज इन एक्सपीरियंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है। इतने हाई प्रेशर मैच के अंदर जब अफगानिस्तान आपके ऊपर चढ़ी हुई है, देयर इज अ चांस ऑफ लूजिंग। यू डोंट वांट टू गिव इट टू समवन हु इज गोइंग टू बकल अंडर प्रेशर। उस टाइम मतलब कि हसन अली ठीक है, शाहिन अफरीदी ठीक है, मैं तो कहता हूँ इफ्तिखार को भी दे देते, इट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। बट वही वाली बात है कि योर स्पिनर्स आर जस्ट लैकिंग द किलर इंस्टिंक्ट राइट नाउ। उनके ठप्पे सही जगह लग नहीं रहे। स्पिन डिपार्टमेंट लुक्स प्रीटी फ्लैसिड, एंड ठीक है, हमारी डेथ बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है वही है कि मिडिल ओवर्स में आपने कंटेन नहीं किया, आपने उनको 6 to 7 रन एन ओवर दे दिया, एंड में जाकर आपको स्ट्रगल करना पड़ा। यू कैन नॉट ब्लेम द बैटिंग दैट दे गॉट 10 to 15 रन शॉर्ट। हालांकि ठीक है, वो अगर कर लेते तो वो हो जाते। आई स्टिल थिंक 280 वाज अ डिफेंडेबल टोटल। We just did not apply the pressure in the middle overs. एंड अनदर थिंग व्हिच हैज कम अंडर द फोकस और बहुत ज्यादा जिस पर तनकीद हो रही है, इस कैप्टनसी इस मैच के। Absolutely. हाँ 100%। बॉलिंग चेंजेस के ऊपर आप देखें, ग्राउंड फील्डिंग वाज आल्सो हॉरिबल। यानी कि उसामा मीर ने जो बाउंड्रीज लेट थ्रू किए हैं, ये खैर मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती, ये तो हमारी पुरानी आदत ही है। मतलब कि फील्डिंग हैज नेवर बिन समथिंग दैट वी बिकेम गुड एट एनी पॉइंट इन आवर लाइफ साइकिल। तो उसको तो रहने ही दें, उसमें तो उम्मीद भी नहीं है ना कि वहां कोई ठीक होगा। बट bowling itself, this is the first time, I think, first World Cup that I feel that we're probably one of the weakest bowling attacks across the 10 people teams that are playing. Yeah. So I think Barber didn't let him do any favors so far with the way he's performed in the last 3 matches, which we have lost. वो struggle कर रहा है और लग नहीं रहा लग। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आई थिंक ही फेल्ट, आई थिंक ही वाज अ बिट लॉस्ट एज वेल। ऑब्वियसली ही वाज एक्सेप्टिंग हिज ब्लेम,
लेकिन पहले में वो कहते हैं कि वी वर 280 वाज डिफेंडेबल, लेकिन बॉलर्स ने सही जगह नहीं लगाया. देन ही सेड कि नहीं, आई थिंक वी वर 15 रन शॉर्ट. तो वहां भी इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही थी, बट ही फेल्ट आउट ऑफ ऑर्डर. इट ही केप्ट ऑन सेइंग कि हम ऐसा नहीं है कि होमवर्क नहीं कर रहे, हम प्लान्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स जो हैं वो चार जगह सही जगह बॉल कराते हैं और दो गलत करते हैं, वो सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, विच आई थिंक इज एन एक्यूरेट असेसमेंट. ठीक है, बिल्कुल उसने. तो आई थिंक ही नोज व्हाट्स द प्रॉब्लम. इट्स जस्ट दैट हिज टीम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. चलो. एंड टू once again, I think अभी भी वैसे मैथमेटिकली देर स्टिल इन सिक्स wins अगर चाहिए तो 4 on the trot जीतनी है starting from next match against South Africa. Yeah. Afghanistan, however, have got 4 points, or they might be looking for some more points. Yeah, I think as usual Pakistan always digs itself into a hole जहाँ एक impossible situation करनी पड़ती है. Then the permutations come into play कि अच्छा वो हार जाए तो ये if and but हो जाए. I think at this point they need to take one game at a time. Don't even think about semi-finals right now. One game at a time लें, and the first priority needs to be win the game. वो लोग नेट रन रेट की बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ नेट रन रेट की क्या बात करनी है जब आप जीत ही नहीं रहे. तो why you need to get back into that winning mindset. Confidence आपको अपने bowlers में लाना पड़ेगा, and you need to be much smarter with your bowling changes. लेकिन next game जो है ना, they need to treat that as do or die. They need to go out fearless cricket. मैं तो कहता हूँ फखर जमान को डाल दें अगर if he's fit, and just go all out. जब तक आप साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे नहीं लेके आओगे ना, वो आपको खा पी जाएगी. जिस तरह वो अभी खेल रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 387 मार दिए उन्होंने, बाकी टीम्स के साथ वो 400 मार रहे हैं. We don't stand a single chance with our bowling attack if we don't play and put the pressure back on South Africans. सही हो गया. So thank you very much, Asir. That's all we've got for today. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी और राब्ता रहेगा as we continue our coverage. So thank you for coming into the studios and sharing your comments. Thank you, Adil bhai. Thank you very much. Okay, अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा. Assalamu alaikum. Hafiz.